It won't be clichéd to say Pakistan is facing unprecedented economic and security challenges. Neither would it be out of place to suggest that so far the policy response towards each of these issues has not inspired much confidence. Reams and reams of paper have been blackened with ink over the decades, with excellent diagnoses and targeted policy prescriptions by experts in economic, security and several other spheres governing national life. It is another matter that policymakers have not bothered to heed such wise counsel. Rest assured, in each case, it is the narrowest of vested interest which has dictated how policy is formulated, and even more significantly, how it is implemented. Where does one start to discuss the tragic consequences of taking this now unsustainable course for years and years? The foremost consequence of such madness is that Pakistani policymakers and their policies have become a victim of habit. Even when Islamabad Rawalpindi placed itself at the center of the Cold War as a frontline state, it often made little sense. But today, it makes no sense at all. It is the narrowest of vested interest which has dictated how policy is formulated. Just look at how the finance minister, whose own obsession with keeping the rupee artificially elevated contributed to the current account deficit in his last stint in office, again thought he'd get away with tough talking with the IMF. He was openly critical of what he saw as his predecessor Miftah Ismail's non-robust stance in negotiating with the institution on its tough demands. Mr. Dar seemed to have convinced his leader Nawaz Sharif that he could deliver and was sent after ending his self-exile in the UK to save PMLN's political capital. The last Ishaq Dar negotiated with the IMF, Pakistan's economy, its foreign exchange reserves, its growth rate, and most importantly, the regional security situation with U.S. troops still present in large numbers in Afghanistan all seemed to be in Islamabad's favor. He may have needed IMF help, but Mr. Dar held a decent suit in his hand. The former army chief's political engineering put paid to that. In the current circumstances, even the most humble student of economics and geopolitics could have told him that either the country goes for restructuring of its debt, including the risk of default, or dances to the IMF's tune, as there appears to be no third option. Restructuring of the economy had to be next. It is mind-boggling how he remained optimistic. He seemed to be the only one, that somehow things would work out if he stretched negotiations and played hardball. There is no doubt that saving political capital has to be on every political party's agenda, but when governing, the interest of the greater good, that is the country, must take precedence. One can't even begin to imagine the burden of debt increased by the PTI or the unfunded subsidies it doled out when faced with the specter of a no-confidence vote, and how it sabotaged its own accord with the IMF. The party's attitude was reflected in those, illegally and reprehensibly, recorded conversations between the PTI's former federal finance minister Clichéd Tarin and the Punjab and KP finance ministers, which demonstrated that the country's interest was relegated to the back burner, while party and political considerations became the greater motivation. The cumulative effect of all this dithering, coupled with global factors well beyond Pakistan's control, is that millions are now living in extreme anxiety in anticipation of even greater, historic inflation which will have an impact on the most fundamental aspects of their lives, such as their ability to feed their families, or to clothe and educate their children. This despite working long hours, often 2 jobs. With the worst in terms of the economy still to come, the Peshawar suicide bombing of a mosque that claimed a nightmarish number of lives of policemen this week following a number of terrorist attacks in recent weeks, again indicated that yet another campaign of terror targeting Pakistan may be underway. Who hasn't heard brave words before, such as those uttered by the Prime Minister at the Apex Committee meeting attended by the civilian and military leaders following the Peshawar carnage, but with PTI's refusal to attend, there is little evidence of unity in meeting the challenge. Neither is there much optimism that a well-tuned policy response will be forthcoming anytime soon. There can be no doubt the TTP is emboldened by their ideological allies coming to power in Kabul. Contrary to all official hopes, the Taliban have done little to put TTP on a leash or even go through with their earlier threat of expelling it. And the policy drift in Pakistan even in this critical area is manifest in different state functionaries articulating different,
often differing, positions. Why? Are they not on one page? The foreign minister decries the Afghan Taliban ban on women's/girls' education, and the country's senior diplomat at the UN in New York attributes the forced exit of millions of female students from institutions since the Taliban came to power to the peculiarities of the Pakhtun culture and traditions and not the ruler's interpretation of faith. His clarification and apology, after the world heard his thoughts in his own voice, was not worth the paper it was written on. Meanwhile, if the establishment continues to wield its influence over the civilian infrastructure, then it should not only be politicians who should be taking the blame for everything that has gone wrong. It may be easy to let the PTI be blamed for allowing armed TTP fighters back in the country, and it did, out of fear or for ideological reasons, when those drawing attention to the dangers were labeled traitors, even jailed, but tell me who'd believe Imran Khan could have managed that all on his own? The writer is a former editor of Dawn. Published in Dawn, February 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को बेमिसाल माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, और न ही ये कहना गलत होगा कि अब तक उनमें से हर एक मसले के बारे में पॉलिसी रद्द-ए-अमल ने ज़्यादा एतमाद पैदा नहीं किया है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से कागज़ के रीम्स और रीम्स को स्याही से रंगा गया है, जिसमें माशी, सलामती और कौमी ज़िंदगी को चलाने वाले कई दीगर शुबों के माहिरीन की जानिब से बेहतरीन तशख़ीस और पॉलिसी नुस्खे शामिल हैं। ये अलग बात है कि पॉलिसी साजों ने इस तरह के दानिशमंदाना मशवरे पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। यकीन रखें, हर मामले में ये सबसे महदूद ज़ाती मफाद है जिसने ये तय किया है कि पॉलिसी किस तरह तश्कील दी जाती है, और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इसे किस तरह नाफिज किया जाता है। सालों और सालों से इस गैर मुस्तहकम रास्ते को इख्तियार करने के अलमनाक नताइज पर बहस कहाँ से शुरू होती है। इस पागलपन का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि पाकिस्तानी पॉलिसी साज और उनकी पॉलिसियां आदत का शिकार हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जब इस्लामी बादावलपिन ने खुद को सर्द जंग के मरकज में फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर रखा, तो अक्सर इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं है। ये सबसे तन मुफाद है जिसने ये तय किया है कि पॉलिसी किस तरह तश्कील दी जाती है। जरा देखिए कि किस तरह वजीर खजाना, जिनका रुपए को मसनूई तौर पर बुलंद रखने के जुनून ने अपने आखिरी दौर हुकूमत में करंट अकाउंट खसारे में इजाफा किया, ने एक बार फिर सोचा कि वो IMF के साथ सख्त बातचीत से बच जाएंगे। वो अपने पेशरो मिफ्ता इस्माइल के सख्त मुतालिबात पर इदारे के साथ मुज़ाकरात में गैर मजबूत मौक़िफ़ पर खुलेआम तनक़ीद करते थे। ऐसा लगता है कि इसहाक डार ने अपने कायद नवाज शरीफ को कायल कर लिया था कि वो काम कर सकते हैं, और बरतानिया में खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने के बाद उन्हें मुस्लिम लीग नून के सियासी दारुल हुकूमत को बचाने के लिए भेजा गया था। गुज़िश्ता इसहाक डार ने IMF के साथ मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान की मईशत, इसके ज़र मुबादला के ज़खायर, इसकी शरह नमू, और सबसे अहम बात यह है कि इलाकाई सलामती की सूरत हाल जिसमें अमरीकी फ़ौजी अब भी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, सब इस्लामाबाद के हक़ में नज़र आते हैं। उन्हें IMF की मदद की ज़रूरत हो सकती थी, लेकिन मिस्टर डार ने अपने हाथ में एक मुहज़्ज़ब सूट थाम रखा था। साबिक़ आर्मी चीफ की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने इसकी कीमत अदा की। मौजूदा हालात में मुआशियात और जुग्राफियाई सियासत का सबसे आजिज़ तालिब इल्म भी उनसे कह सकता था कि या तो मुल्क अपने कर्ज़ों की तंजीम न करे जिसमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी शामिल है, या फिर IMF की धन पर रक़्स करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मईशत की तंजीम नो अगली होनी चाहिए थी। ये बात हैरान कुन है कि वो किस तरह पुरुम्मीद रहे, और ऐसा लगता था कि अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं और हार्ड बॉल खेलें तो किसी न किसी तरह मामलात ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी सरमाए को बचाना हर सियासी जमात के एजेंडे पर होना चाहिए, लेकिन हुकूमत करते वक्त वसीतर भलाई यानी मुल्क के मुफाद को तरजीह दी जानी चाहिए।
ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कर्जों के बोझ में कितना इजाफा हुआ है। इसने अदम एतमाद के वोट के खतरे का सामना करते हुए इसकी जानिब से दी जाने वाली गैर फंडिंग सब्सिडीज और किस तरह इसने IMF के साथ अपने ही मुआहदे को सबूताज किया। PTI के साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और पंजाब और KP के वज़राए खजाना के दरमियान होने वाली गैर कानूनी और गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू से पार्टी के रवैये की अक्कासी होती है, जिससे जाहिर होता है कि मुल्क के मफाद को पसपुश्त डाल दिया गया है, जबकि पार्टी और सियासी मसलहतें ज्यादा मुहर्रिक बन गई। पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर आलमी अवामिल के साथ मिलकर इस तमाम इख्तिलाफात का मजमूई असर यह है कि लाखों लोग अब इससे भी ज्यादा तारीखी इफरातज़र की तवक्को में इंतहाई इज़्तिराब में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका उनकी जिंदगी के सबसे बुनियादी पहलुओं पर असर पड़ेगा, जैसे उनकी अपने अहल खाना को खुलाने की सलाहियत, अपने बच्चों को कपड़े पहनने और तालीम देने की सलाहियत। यह तवील घंटों तक काम करने के बावजूद अक्सर 2 मुलाजमतें हैं। मईशत के लिहाज से बदतरीन सूरत हाल अभी बाकी है। पेशावर में एक मस्जिद पर होने वाले खुदकुश बम धमाके, जिसमें हालिया हफ्तों में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बाद इस हफ्ते पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद हलाक हो गई थी, ने एक बार फिर इशारा दिया है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली दहशतगर्दी की एक और मुहिम जारी है। सानिहा पेशावर के बाद सिविलियन और फौजी रहनुमाओं की शिरकत वाली अपेक्स की कमेटी के इजलास में वजीर आजम की जानिब से कहे गए जुरतमंदाना अल्फाज पहले किसने नहीं सुने, लेकिन PTI के शिरकत से इनकार के बाद इस चैलेंज से निमटने में इत्तेहाद के बहुत कम सबूत मिले हैं। न ही इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि जल्द ही एक अच्छी पॉलिसी का जवाब सामने आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि TTP को काबुल में अपने नजरियाती इत्तेहादियों के इक़्तिदार में आने से हौसला मिला है। तमाम सरकारी तवक्कुआत के बरक्स तालिबान ने TTP को कमजोर करने, उसे बेदखल करने की अपनी साबिका धमकी पर अमल करने के लिए बहुत कम काम किया, और इस नाजुक शोबे में भी पाकिस्तान में पॉलिसी का रुख मुख्तलिफ रियासती ओहदेदारों की जानिब से अक्सर मुख्तलिफ मौक़िफ़ बयान करने से जाहिर होता है। क्यों? क्या वो एक सफ़े पर नहीं है? वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान तालिबान की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों की तालीम पर पाबंदी की मज़म्मत की, और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्क के सीनियर सिफारतकार ने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इदारों से लाखों तालिबात के जबरी इनखला की वजह पख्तून सकाफ़त और रवायात की ख़ासियत को करार दिया, न कि हुक्मरानों के अक़ीदे की तशरीह को। दुनिया की जानिब से उनके ख़यालात को अपनी आवाज़ में सुनने के बाद उनकी वजाहत और मुआफ़िक इस कागज़ के काबिल नहीं थी जिस पर यह लिखा गया था। दरियासना, अगर इस्टेब्लिशमेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना असर और रसूख जारी रखती है, तो ये सिर्फ सियासतदानों को नहीं होना चाहिए जो हर गलत काम की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। PTI पर TTP के मुसल्लह जंगजुओं को मुल्क में वापस आने की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगाना आसान हो सकता है, और उसने खौफ नज़रियाती वजूहात की बना पर ऐसा किया। जब खतरात की तरफ तवज्जो मबजूल कराने वालों को गद्दार करार दिया गया, यहाँ तक कि जेल भी भेज दिया गया, लेकिन मुझे बताएं कि कौन यकीन करेगा कि इमरान खान ये सब अपने बिल बोते पर कर सकते थे। मज़मून निगारदान के साबिक एडिटर हैं। अखज़ शुदा बतारीख 5 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.